Good morning, students. I am explaining two questions of the HOTS, question number 1 and question number 2. So question number 1, this is figure and we have to find the value of x, y, z and some lines are given parallel. Here these are parallel and these are parallel. So I have written some means label the diagram. Extra also I have written wherever it is required. So first of all, you see angle 1. For finding the y, 110 only this angle given. So directly there is no relation between 110 and y. So how we can find this one angle 1? I am writing this. So this bilinear pair, how much we will get this? 70 degree bilinear pair. This I have written. So y or angle 1, this what is the pair? 1 and y. Alternate interior angle and L and M are parallel. This also I have written from my side. I have labeled the diagram and some extra name, this L, M, A, B, C, this I have written. So this Y will be of angle 1, 70 degree. Okay, and here reason is there, L parallel to N and by pair of alternate interior angle. After that angle 2 this is equal to Y because both are corresponding angle. Which parent? AB parallel to EF. So AB parallel to EF by corresponding angle 2 also we have got. Why I am finding angle 2? And this I am written from my side in the figure, angle 2 not labeled in your diagram. So Y we have got, now angle 2 also we have got. After finding angle 2 we can find angle Z by angle sum property of triangle. So in triangle EFC by angle sum property 2 plus 50 plus Z, this I have written Z plus 2 plus C. C means this angle. So all sum will be 180 degree and two angles we know, this angle and this angle. So I am putting this value and finding angle Z is equal to 60 degree. After finding angle Z, here X, I forgot to write, here we will write more. What will be X? Z and X are which pair? See carefully, Z and X are corresponding. So X is equal to Z is equal to 60 degree. And which pair? AB parallel to EF. And which pair? Z and X corresponding angle. Corresponding pair. So this is the answer. X, Y, this is our answer. Or otherwise at last you can also write this answer, X, Y and Z, this is our answer. Three answers are there, this X, this Y, Z and this X. These are our answers. Now see the question number next. Here very carefully you observe, it is given in the figure angle bisector of the interior angles. Means angle bisector of interior angle means these are the interior angles. Okay, see carefully, ये देखो, ये this is the interior angle. तो its bisector means this line and इसका इस angle का bisector this line. They both are intersecting at Q. Here also some I have labeled extra and it is given at Q. L and M are given parallel and we have to find X and Y. We have to find this X and this outside Y and no more, nothing given. Only given these and these lines are angle bisector of interior angle. Means इस angle का ये interior ये angle bisector है, इस angle का ये bisector है. So how we will find? See, if this is angle bisector तो what we can do? A both same रहेगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है बराबर भाग में बांटना. तो दोनों आई एम टेकिंग वन नेम ऑफ दिस एंगल, दिस साइड एंड दिस साइड ए, दिस साइड एंड दिस साइड बी, बिकॉज बोथ आर सेम. नाउ व्हाट विल बी सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल? एल एंड एम आर गिवन पैरेलल. सो हियर आई एम राइटिंग एल पैरेलल टू एम and by which pair? Supplementary pair. L and M are given parallel. So what is the supplementary angle? See, I am drawing here और यहाँ से आप देखना ये ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए?
क्या होगा यदि दोनों पैरेलल है तो इट विल बी 180 डिग्री। दिस वी हैव लर्न अबाउट को इंटीरियर, इसी को को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। दिस सम विल बी को इंटीरियर एंगल, सो सप्लीमेंट्री पेयर नो आई एम राइटिंग बेटर हियर को इंटीरियर पेयर, को इंटीरियर एंगल्स। सो विद द को इंटीरियर एंगल्स इन दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ किसका किसका सम होगा, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होगा। तो ये कितना है 2a और ये कितना है 2b, मीन्स 2a प्लस 2b कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b 180 डिग्री। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस 2 कॉमन a प्लस b 180 डिग्री and a प्लस b कितना बचा 2 दैट साइड 90 डिग्री। सो इन दिस डायग्राम नाउ सी इन ट्राइंगल a b q, a और b का वैल्यू आ गया, मतलब सम सेपरेट वी आर नॉट गेटिंग, a प्लस b वी आर गेटिंग, इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। नाउ a plus b plus x how much, that will be a plus b plus x will be how much, it will be 180 degree by angle sum property of a triangle, here I have written. Now by angle sum property of triangle ABQ, a plus b plus x will be 180 degree। अब इसमें से a plus b we know, यहाँ से निकाल लिए 90, तो x बस बचा, तो x is equal to 180 minus 90 90। So what is the value of x, 90 degree। And for finding y का देखो दैट साइड नो रिलेशन इज देयर, लेकिन इधर भी वही सेम कंडीशन है, दिस इज आल्सो एंगल बाइसेक्टर, तो सेम ऐसी रहेगा, बट y आउटसाइड दिया है तो फर्स्ट आई एम राइटिंग फाइंडिंग एंगल c, यहाँ स्मॉल से लिख लिए, एंड दिस इज c। सो सिमिलरली c इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे ये x 90 डिग्री है तो ac कितना आ जाएगा 90 डिग्री बाय द सेम वे। तो c 90 डिग्री है तो y कितना होगा, y और c which pair, vertical opposite angle, and we know that vertical opposite angles are equal। तो पहले c निकाल लिए 90 डिग्री, फिर बाहर का y को भी, y will be also 90 डिग्री। So here this is the answer, value of y and value of x, here this is answer। So here these are the two answers, ये आंसर है और ये आंसर है। So now this chapter over, one question left of enrichment, that is very easy, you see that question, one by one you can find all angles। So this chapter is over and you solve all, if any problem then you can ask me, okay।